Good morning, Chitra. Good morning. Can you hear me? Yes. Good morning. Okay. So how are days going? It's going very fine. Absolutely fine. And उसकी कोई continuity आई? वो तो job offer आ रहा था. नहीं apply किया, but it's not yet taken forward. But yeah. Okay. But definitely उस context में जो stress है वो definitely कम हुआ है. In a different way. So like वो पहले एक restlessness रहता था ना कि like कुछ नहीं आ रहा है और that insecurity stress वाला कम हो गया है बहुत. Oh, very good. बहुत कम हुआ है. And overall, I think also stress levels have come down a lot. But it's just that other thing, I've just last 1 or 2 days, I'm having a little bit of constipation. I think that's got to do with the other thing of food. So both thoda hai, but so just yesterday, today has been a little low in terms of health. Thoda sa, not much, a little bit. And that's also like, more just constipation, but okay. Otherwise fine. जब change करते हो ना कुछ भी तो bowel movements change shift हो जाती. Yeah, so I'm not so worried about it. वो set हो जाएगा मालूम है. But I think now that confidence is there कि things will work and it's in our hands for it to work. हाँ, so the question which is coming to my mind is कि आप visualize क्या करते हो आजकल अपने लिए? मेरे लिए visualizing that I'm in the pink of health. I am being very mindful of what I'm eating. I am exercising well. I am fit. I am able to do my walking and everything every day. And I'm in that happy. मैंने कहा था ना मैं visual is lighter, happier, fitter. So that's the way I'm looking at myself. Very good. तो जब आप job के लिए visualize करते हो तो कैसे करते हो? Good question. Honestly, उतना visualize नहीं किया. In the sense that it's, I mean, जितना मैं इसको बोल रही हूँ, so that is when I realized when you asked me this question. जितना मैं अभी health के लिए मैं visualize कर रही थी, उतना मैंने job की तरफ से visualize नहीं किया. हाँ, तो so I think I got the answer. That's where it lies. ठीक है, because आप मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं. Correct. है ना? आपके मन के अगर अंदर बैठा हुआ है तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा. Got it. ठीक है, तो आज Good morning, Namrita. Good morning, ma'am. How are you doing? Much better, ma'am. Baby भी अब काफी ठीक है. उसका बस स्किन इरिटेशन रह गया, स्किन पील ऑफ होना चालू हो गया, घाव वाव काफी ठीक है. Very good. उसको जबरदस्ती जो दवा दे रहे थे वो भी मतलब एक तरफ से बंद हो गया. तो बिग रिलीफ. Okay. So वो गुड बॉय हो गया है ना, क्योंकि आपने उसको तंग करना बंद कर दिया. Yes. ठीक है, चलो आज ना. So first of all, wishing everybody a very very happy Holi. Thank you, ma'am. Same to you. Thank you. And you know, this Holi may bring so many colors in your life and 7+ colors on your plate always. Yes, ma'am. Reminder. ठीक है, बिल्कुल रिमाइंडर बहुत जरूरी है. दाने जी, तो आज इस खूबसूरत से फेस्टिवल पर ना आई थॉट लेट्स डू समथिंग डिफरेंट. सो वी विल रीड आवर चैप्टर एंड बट बिफोर दैट लेट्स प्रैक्टिस अ लिटिल बिट ऑफ विजुअलाइजेशन, क्योंकि जो भी हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं ना उसमें विजुअलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, और जब तक हम अपने आप को या जो भी हमें चाहिए हम उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, तब तक हम उसे कितनी जल्दी अपनी लाइफ में फील करेंगे पाएंगे इज वेरी डिफिकल्ट टू से. ठीक है, सो आई थॉट बिफोर वी कंप्लीट दिस जर्नी एट लीस्ट वी शुड स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ विजुअलाइजेशन आल्सो. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, राइट, जो मैंने I've learned from my mentors. कुछ नित्य से सीखी होगी, कुछ there are other few people who are very very good at it. ठीक है, but let's do it.
2-3 मिनट लगेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट रीडिंग आवर चैप्टर. सो आर यू गाइज रेडी? परफेक्ट. सो पहले ना अपने हाथ ऐसे रखकर डीप ब्रीथ करके देखो. ये हाथ आपके ऐसे आपके लैप पे होने चाहिए एंड डीप ब्रीथ. ओके. अब अपने हाथों को ऐसे करना आपने. यस. एंड आप देखो एंड मुझे बताना है किसमें आपकी डीप ब्रीदिंग हुई, किसमें शैलो हुई. किस किस पोजीशन में डीप हुई थी? एग्जैक्टली. नम्रता? सेम मैम, दिस पोजीशन, रिसीविंग पोजीशन. हाँ, तो ये रिसीविंग और गिविंग दोनों पोजीशंस है. तो जब भी हम विजुअलाइज करते हैं कुछ, so this is the position which connects us to the universe. ठीक है. सो पहली चीज तो ये ठीक रखनी है हमने. सेकंड चीज क्या ठीक रखनी है? हम जब भी विजुअलाइज करते हैं हमें अपनी स्पाइन इरेक्ट रखनी है. whole of our spine has to be straight. Why? Again, because straight spine जो है ना, वो हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करती है. ठीक है. सो ये दो चीजें अगर हमारे पोस्चर में नहीं है तो आप विजुअलाइजेशन कर ही नहीं सकते हो. ओके. तो अगर ये दो हमारे पोस्चर में नहीं है तो वी कांट विजुअलाइज. अब कम्स द थर्ड मोस्ट 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 क्रिटिकल पिलर, जो कि हमारी विजुअलाइजेशन सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी उसको डिफाइन करता है. एनी आइडियाज क्या है वो? मैं ऑलरेडी हिंट दे चुकी हूं. सो बहुत से लोग क्या करते हैं ना, दे थिंक कि विजुअलाइज तो किया बट ट्रू तो हुआ ही नहीं. ठीक है. क्यों नहीं ट्रू हुआ? सबसे बड़ा उसका रीजन ये होता है कि ना हमारे माइंड में बहुत चिटर चैटर चलता है पूरा टाइम. यस और नो? यस मैम, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है मैम विजुअलाइजेशन में. मैं काफी एफर्ट देती हूँ, नहीं होता है मेरा. तो जब तक आप अपना माइंड का चिटर चैटर नहीं सेटल कर पाते हैं तब तक विजुअलाइजेशन नहीं होगा. अब उसके लिए क्या क्या टूल्स हैं? सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जो कि हम पैदा ही उससे होते हैं और जब तक हम अलाइव रहते हैं वो ही डिफाइन करता है हम अलाइव है कि नहीं है. क्या टूल है वो? ब्रीदिंग. एग्जैक्टली, ब्रीदिंग. सो डीप ब्रीदिंग, इस पोजीशन में हाथ रखकर एंड पूरा टाइम यू हैव टू थिंक नाउ योर ब्रेथ इज गोइंग फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स टू द हेड टू नाउ थ्रू द स्पाइन टू द इसोफेगस टू द स्टमक. मतलब इतना बढ़िया से आपने ब्रेथ का पूरा फ्लो इमेजिन करना है, अंदर जाता हुआ और बाहर आता हुआ, कि अगर रास्ते में कोई साइडर्स है भी जो कि देख रहे हैं उसको, हमारे दिमाग में आ रहे हैं, हमारी आंख इधर उधर जा रही है, जैसे ही आंख इधर उधर जाएगी ना उन बाय स्टैंडर्ड्स को देखने के लिए, हम भूल जाएंगे अब हमारा ब्रेथ कहाँ है. सो वील अगेन हैव टू कम बैक एंड फोकस ऑन आवर ब्रेथ. सो जब भी विजुअलाइजेशन करना है उससे पहले चाहे 1 ब्रेथ लें, चाहे 3 लें, चाहे 10 लेने की जरूरत पड़े, सबसे पहले क्या है, आपको अपनी डीक्लटरिंग पे वर्क करना है. बिफोर गेटिंग इनटू विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप पहले अपने ब्रेन को 30 सेकेंड्स के लिए डीक्लटर तो कर पाओ. ठीक है. अब अगर आपको लगता है ब्रीदिंग से होता ही नहीं है, then the next way to declutter your brain is you draw what you want to visualize. जब आपको कोई चीज सामने दिखती है ना तब आपका फोकस ज्यादा होता है उस चीज पर, क्योंकि आपकी विजुअल सेंस भी जो है ना वो भी इन्वॉल्व हो जाती है.
सो जैसे जैसे जितना ज्यादा आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल आई शेयर्ड बिफोर आल्सो, मैं फूड मेडिटेशन करके कुछ लेक्चर्स लेती हूँ. यू विल फाइंड दोज यू नो classes on my YouTube channel also. So the purpose, the food meditation is a very, very simple technique, but in which we use all our five senses to eat food. क्योंकि हम जब ये जितनी ज्यादा सेंसेस किसी भी चीज पे एनर्जी लगाते हैं ना, तो ये पावरफुल एनर्जी की तरह उसमें से ऑल द गुड थिंग्स लेती है. सो व्हेन वी यूज ऑल आवर फाइव सेंसेस, तो हमारी डाइजेशन अपने आप से बहुत हद तक ठीक हो जाती है. पर उसमें भी यही चैलेंज है, हम इतना डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, हम खाना खाते टाइम 10 और चीजें सोच रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, कि वो जो डाइजेशन की ऊर्जा क्रिएट होनी होती है ना, वो हो ही नहीं पाती. इट गेट्स सो डाइल्यूटेड. ठीक है. सिमिलरली विजुअलाइजेशन. सो नम्रता, yes ma'am. out of these two, you don't have to do one, you have to do both. Okay ma'am. पहले आपने अपनी पोजीशन पे काम करना. आई एम नॉट श्योर आपकी पोजीशन कैसी होती है उस टाइम. नहीं मतलब जो हाथ वाला और बैक, मतलब ये मैं वैसे ही रखती हूँ. बिल्कुल ठीक है. एंड देन थर्ड इज योर ब्रीदिंग. एंड ब्रेथ में आपने एक एक सांस को इमेजिन करना है कहाँ जा रहा है. जितनी डीपली इमेजिन करोगे उतने थॉट्स अपने आप साइड में रहेंगे. ये नहीं करती हूँ मैम, ये करूंगी, है ना. एंड देन फाइनली जो भी विजुअलाइज करना है उसको ड्रॉ करके सामने रखना. राइट. सो डू दैट एक्सरसाइज पहले, कि मेरे को ड्रॉ करके पहले रखना है. नाउ लेट्स प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन एंड आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस. आपने वो आंसर करते जाने अपनी विजुअलाइजेशन में, ताकि हम अपनी विजुअलाइजेशन को रियलिटी जल्दी बना पाए. सो आर यू गाइज रेडी? यस मैम. परफेक्ट. रेडी. तो अपनी पोजीशन में बैठेंगे. ठीक है. स्ट्रेट, बिल्कुल स्पाइन, नेक बिल्कुल स्ट्रेट. राइट. परफेक्ट. सो व्हाट इज इट दैट यू वांट इन योर लाइफ? मनी, पावर, लव, फेम, जो भी आपको चाहिए वो सोचो और उसको विजुअलाइज करो. ऐसे विजुअलाइज करना है जैसे वो आपको मिल गया है. You are seeing it happening in front of your eyes. Why do you want it? क्यों चाहिए आपको वो? आपको क्या फील होगा जब आपकी ये विजुअलाइजेशन ट्रू हो जाएगी? हाउ विल यू फील? और क्या होगा जब आपकी ये विजुअलाइजेशन पूरी हो जाएगी? उस टाइम में फीलिंग के साथ लग कैसी रही होंगी? हाउ वुड आई बी लुकिंग एट दैट टाइम? उसके बाद क्या होगा? क्या फील हो रहा होगा जब उसके बाद जो मैं सोच रही हूँ वो हो रहा होगा? तो
थोड़ा और डीप में जाके सोचो, हाउ वुड यू बी फीलिंग, व्हाट वुड बी हैपनिंग अराउंड यू, आपके आसपास कौन कौन होगा, क्या कर रहा होगा. ना स्लोली अपना जो भी आप चैंट करते हैं वो चैंट करो, उस विजुअलाइजेशन की पिक्चर को बिल्कुल सामने रखो एंड slowly and steadily open your eyes. कैसा गया आपका विजुअलाइजेशन? How was it? Fantastic. Could you feel कुछ डिफरेंस था हर बार जो विजुअलाइजेशन करते हो और जो आज किया है? 100%. So नम्रता, फीलिंग थी मैम, बहुत फीलिंग थी साथ में, राइट, इमोशन फीलिंग बहुत स्ट्रांग था. फीलिंग ही लाना है, इसलिए यू हैव टू आस्क योरसेल्फ डिफरेंट क्वेश्चंस. क्या चाहिए पे बात नहीं खत्म होती, क्यों चाहिए. जब वो मिलेगा तो फील कैसा होगा, जब वो फील होगा तो मेरे आसपास कौन कौन होगा, जब मेरे आसपास वो सब होंगे तब मुझे कैसा फील हो रहा होगा, राइट. और उसके बाद क्या होगा, अब ये तो मुझे मिल गया क्योंकि मैंने विजुअलाइजेशन कर ली, आई हैव अचीव्ड इट. उसके बाद में रिजल्ट क्या होगा, उस टाइम पे मेरे पास कौन होंगे, उस टाइम पे मैं क्या फील कर रही होंगी. सो अगर चित्रा आपने अपनी जॉब के लिए विजुअलाइज किया था आज की, अभी नहीं? गुड. तो आपने जब उसके बाद क्या होगा, मैं अपनी नई गाड़ी देखी कि नहीं देखी? House. More than that, I saw a house. हाँ, बट दोनों देखने चाहिए थे, ठीक है. बिकॉज एंड देन जब आप गाड़ी देखोगे, घर देखोगे, तो आपको लोकेलिटी पता होनी चाहिए घर की, आपको कितने कमरे होंगे, उस कमरे में क्या वॉलपेपर होगा, क्या कलर होगा, कौन सी विंडो पे बैठ के आप चाय पी रहे होगे, आपका कौन सा व्यू होगा. तो विजुअलाइजेशन में ना, एवरी डे व्हेन यू डू इट, आप कुछ और नया उसके साथ देखते हो. तो एक ही विजुअलाइजेशन को आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी होती है उसको रियल लाइफ का सिनेरियो बनाने के लिए, ठीक है. बट दिस इज द वे वी हैव टू डू इट. सिर्फ ये बिल्कुल स्टार्टर तरीका आई थॉट बहुत बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये 6-7 क्वेश्चंस रहते हैं and you keep asking those questions to yourself, you will be able to create energy in your visualization. ठीक है जी, perfect. Aj, who is going to read? One question before that. Hello. Yes, Chitra. Yeah. See, one thing which I had is Yeah. Ask. probably वहीं पर मेरा छूट रहा है कि when I'm doing visualization, I think I'm prioritizing which one I want to visualize on. Is that right or wrong? Because जैसे आपने कहा था आज No, it is right. Okay. Because क्या हो रहा था, like maybe because of the circumstance or because of my priority, शायद मैं बार बार हेल्थ पे ज्यादा और 2-3 दिन में एक बार it would be job. तो शायद is it that it's getting disturbed because I'm doing it as two? हाँ, तो you can do 2-3 visualizations also, Okay. but at Okay, different fine. times, but at the same frequency. Understood. Now I got it. है So ना? I think तो that is where the big miss was. हाँ. आपको हेल्थ के लिए तो करना ही है, बट हेल्थ के साथ जॉब के लिए भी करना है. Yes. So I think वो because that वो priority Because- लेता है, so I sort of end up doing that more. हाँ, नहीं तो do both. Sure. Yeah, very good. So before your very eyes. Wow. So who is going to read it? मैं पढ़ूं? हाँ, बिल्कुल. Thank you. This world, after all our science and sciences, is still a miracle. Wonderful,
inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. Thomas Carlyle. 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind and I would say the magic words thank you for it multiple times in a day and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable around surrounded me. As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list, and the reason I was on that plane was before my eyes. Gratitude. So I beautiful, no? absolutely, absolutely. I've shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that it's truly priceless. From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. To give you an idea of the enormousness of receiving all my desires in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. The money I owed on my personal credit card was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's life, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. So now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you create. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can as if you have it now. Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward, and whenever you have time, open it, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you're like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy because what seemed impossible was made possible through the magical power of God. ब्यूटिफुल. आज होली वाले दिन इससे खूबसूरत चैप्टर नहीं हो सकता था, राइट? Correct.
Yes. Practice number 22. Before your very eyes. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. 4. Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can. Lastly, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Wow. Thank you, Chitra, for reading such an amazing chapter. Yes, any questions? So, Chitra, this chapter answers your question very beautifully, right? Yes, absolutely. So, ek And do pe nahi focus the, karna. the biggest magic always is that getting the right chapter. Right. No, and you don't have to focus on 1, 2. Universe can give you thousands. Understood. Just write all of them and keep looking at them and visualizing you've achieved all of them. Sure. Okay. Yes. So no questions. We will sing our little line and then have a beautiful Holi. Right. This little light of mine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, let it shine, let it shine, let it shine. Beautiful. Have a lovely day. Happy Holi and see you guys tomorrow. Happy Holi. Thank you. Bye-bye.